Good morning, student. Good morning, my dear students. Today topic start now magnetic properties. Today topic start now magnetic properties. Magnetic properties. The magnetic property of compounds. The magnetic property of compounds are due to the presence of unpaired electron. The magnetic property of compounds are due to the presence of unpaired electron. What is magnetic properties? The magnetic properties of compounds are due to the presence of unpaired electrons. The presence of unpaired electrons. The reason of magnetic properties. The reason for magnetic properties is two types motion of electrons. The reason for magnetic properties is two types motion of electrons, and first orbital motion and second spin motion. The reason for magnetic properties is two types of motion of electrons, first orbital motion and second spin motion. Magnetic momentum or magnetic moments is sum of two orbitals mu L plus mu S is equal to magnetic momentum. तो magnetic momentum sum of two motions. Magnetic momentum sum of two motion. Mu L Bm unit of magnetic momentum Bohr magneton. Hence mu L is equal to orbital magnetic momentum and mu S is equal to spin magnetic momentum. The reason for magnetic properties is two types of motion. The reason for magnetic properties is two types of motion of electrons, and first orbital motion and second spin motion. Magnetic momentum is sum of two motion. Orbital magnetic momentum plus spin magnetic momentum is equal to magnetic momentum. Unit of magnetic momentum Bohr magneton. The electrons itself work as a small magnet. One electrons itself work as a small magnet. These electrons as a small magnet. These electrons itself work as a small magnet. Magnetic momentum is expressed is Bohr magneton. One Bohr magneton is equal to EH upon 4 pi mc. One Bohr magneton is equal to EH upon 4 pi mc. One Bohr magneton is equal to EH upon 4 pi mc. Repeat now. The magnetic properties of compounds are due to the presence of unpaired electron. The magnetic properties of compounds are due to the presence of unpaired electron. The reason for magnetic properties is two types motion of electrons. The reason for magnetic properties is two types of motions of electrons, and first orbital motion and second spin motion. Magnetic momentum is sum of two motion. Magnetic moments sum of two motion, and orbital magnetic momentum and spin magnetic momentum. Orbital magnetic momentum and spin magnetic momentum is equal to magnetic momentum. Hence mu L is equal to mu L
L for orbital magnetic momentum, S for spin magnetic momentum. These electrons work itself a small magnet. These electrons, या 10 electrons itself work as a small magnet. The electrons itself as a small magnet, एक small magnet, एक छोटा सा magnet, small magnet की तरह behave करेगा. In transition elements n-1d electrons. In transition elements, n-1d electrons are held on the surface only. In transition elements, n-1d electrons are held on the surface only. In transition elements, n-1d electrons are held on the surface only. Hence, are affected more by the external force. In transition elements, n-1d electrons are held on the surface only. n-1d electrons are held on the surface only. Hence, are affected more by external force. As a result, their orbital motion is restricted. Their orbital motion mu L and mu S. Hence, their orbital motion is restricted and because negligible. Orbital motion and spin motion. Orbital motion as in negligible because their orbital motion is restricted. Their orbital motion is restricted and becomes negligible. Mu L negligible. Mu L very less than mu S. तो mu इज इक्वल टू mu L प्लस mu S. नेग्लिजिबल करके इसको छोड़ दो तो mu पार्शियली इक्वल mu S समथिंग mu S. तो mu इज इक्वल टू mu S. In this condition, in transition elements, n-1d electrons are held on the surface only. Hence, the affected more by external force. Their orbital motion is restricted. And becomes negligible. In the condition, तो mu is equal to mu L plus mu S. Mu is equal to mu S. नेग्लिजिबल करके इसे छोड़ दो. Magnetic momentum of magnetic material can be calculated by using of following formula. Mu is equal to root n bracket start n plus 2 Bohr magneton. Mu is equal to root n bracket start n plus 2. Calculated using of formula magnetic momentum is mu is equal to root n bracket start n plus 2. Hence, mu is equal to magnetic momentum n is equal to number of unpaired electron in elements or ions or compounds. Ions, compounds or elements. Ions, compounds and elements. Mu is equal to magnetic momentum is equal to formula of magnetic momentum is mu is equal to root n bracket start n plus 2 unit of magnetic momentum Bohr magneton. Hence, mu is equal to magnetic momentum n is equal to number of unpaired electron of ions in ions, compounds and elements. When magnetic momentum increase, then number of unpaired electron increase. Magnetic momentum increase, then number of unpaired electron increase. When number of unpaired electron increase in any elements, then magnetic momentum are increase. Number of unpaired electron
increase, then number of magnetic momentum increase. Number of unpaired electron, suppose that 1, so magnetic momentum is equal to 1.73. Number of unpaired electron 2, magnetic momentum 2.84. Magnetic momentum 3, number of unpaired electron 3, magnetic momentum 3.87. Number of electron 4, 4.90. Number of unpaired electron 3, 3.87. Number of unpaired electron 4, 4.90. Number of unpaired electron 5, 5.92 Bohr magneton. Number of unpaired electron is 1, only one is equal to 1.73 Bohr magneton. Magnetic momentum is equal to 1.73 Bohr magneton. In any elements are present of number of unpaired electron 2, then magnetic momentum of 2.84 Bohr magneton, and 3 numbers of unpaired electron, use of magnetic momentum 3.87. Number of unpaired electron 4 is equal to 4.90 Bohr magneton. 5 unpaired electron के लिए 5.92 Bohr magneton. For example, scandium +3. First question is, how many numbers of unpaired electron in ions of scandium +3? How many numbers of unpaired electron in scandium +3? What is the magnetic momentum of scandium +3? First question is, how many numbers of unpaired electron in scandium +3, and second question is, what is the magnetic momentum of scandium in scandium +3? What is the magnetic momentum in scandium +3? Scandium +3 magnetic momentum. For example, scandium +3, question number first, how many numbers of unpaired electron in scandium +3, and what is the magnetic momentum in scandium +3? Scandium +3, atomic number of scandium, organ 18 and 4s2 3d1. Scandium, on charge scandium +3, स्कैंडियम पर +3 चार्ज है, सो +3 इलेक्ट्रॉन लेस. आउटरमोस्ट, सबसे पहले आउटरमोस्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे. 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से. देन ऑर्गन 18, 4s0 एंड 3d0. सो ऑर्गन 18 रिप्रेजेंट करेगा ऑर्गन को. टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन 0. टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन 0. क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि ऑर्गन इज अ इनर्ट गैस और नोबल गैस. सो all noble gas, all inert gas have total number of unpaired electron 0. So scandium +3 have 0 magnetic momentum. Scandium +3 have only 0 magnetic momentum. What is the magnetic momentum? Unpaired electron 0. So magnetic momentum is equal to root n bracket start n + 2 Bohr magneton. N means number of unpaired electron. Number of unpaired electron 0 Bohr magneton. Number of unpaired electron 0, then magnetic momentum is equal to 0. Question number second. Chromium +2. What is magnetic momentum of chromium? What is magnetic momentum of chromium +2? सबसे पहले आपको करना क्या है, क्रोमियम +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे. तो ऑर्गन 18, 4s2 24, एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम 24, ऑर्गन 18, 4s2 3d4. क्रोमियम +2 2 चार्ज है. 2 चार्ज का मतलब +2 चार्ज का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करने. तो आउटरमोस्ट सेल से सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेंगे. 2 प्लस चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेस कर दो.
ओनली 3D के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑर्गन 18 3D 1 इलेक्ट्रॉन, 3D 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्गन 18 एज ए इनर्ट गैस बट 3D 4, इसका तो मैग्नेटिक मोमेंटम हो गया 0, बट इसका मैग्नेटिक मोमेंटम 0 नहीं होगा। सो 3D 4 डी सब सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 2 3 4 एंड 5, फिल इन 4 इलेक्ट्रॉन in d orbital 1 2 3 and 4, number of unpaired electron is equal to 4. So magnetic momentum is equal to root n bracket start n plus 2 Bohr magneton. N is what is the n क्या है? n is equal to number of unpaired electron. Number of unpaired electron is 4 plus 2, 4 2 6 और 4, 6 multiply 4 24 Bohr magneton. नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4, और 4 के लिए मैग्नेटिक मोमेंटम होता है 4 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग्स, 4.90 बोर मैग्नेटॉन. नेक्स्ट एग्जाम्पल आप खुद करेंगे. थर्ड एग्जाम्पल, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन वेनेडियम +2. फर्स्ट क्वेश्चन number of unpaired electron, second question is magnetic momentum. For example is nickel +2. First question is how many numbers of unpaired electron in Ni +2 and what is the magnetic momentum of Ni +2. Magnetic momentum. Next example is Zn +2. How many numbers of unpaired electron in Zn +2? And second question is what is the magnetic momentum of Zn +2? Okay okay students. Next topics. There are many types of magnetic properties. There are many types of magnetic properties. There are many types of magnetic properties are found in substance. There are many types of magnetic properties. There are many types of magnetic properties are found in substance. Main three types of given is, first is main three types of given. There are many types of magnetic properties are found in substance. There are many types of properties. Magnetic properties are found in substance. And first, diamagnetism. And second, paramagnetism. And third, ferromagnetism. There are magnetic properties are three types, and first diamagnetic, second paramagnetic, and third ferromagnetic. First is diamagnetic. The substance in which paired electrons are present have zero magnetic moment. Diamagnetism. The substance in which paired electrons are present. The substance in which paired electrons are present have zero magnetic momentum. The substance in which paired electrons are present have zero magnetic momentum because both the electrons neutralize effect of each other.
because both the electrons, first electron and second electrons, both the electrons neutralize effect of each other. The substance in which paired electrons are present have zero magnetic momentum because both the electrons neutralize effect of each other. Plus 1/2 and minus 1/2 total 0. So magnetic momentum is equal to 0 magnetic momentum. Such substances are known as diamagnetic. Diamagnetic. If number of unpaired electron is equal to 0, unpaired electron 0, 1 plus half and minus half, total rotation 0. So magnetism is diamagnetic. The substance in which magnet is diamagnetic. If number of unpaired electron 0, so magnetic momentum is equal to 0. Magnetic momentum is equal to 0. These compounds is diamagnetism. This compound is diamagnetism. They do not show any types of magnetic behavior in absence of magnetic field. Suppose that आपके पास 2 मैग्नेट्स है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, बट यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेटिक मटेरियल सपोज दैट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल 2 मैग्नेट हैं और इसके अंदर आपने क्या कर दिया, मैग्नेटिक मटेरियल इसके अंदर फिल कर दिया. बट ये मैग्नेटिक, अब फिलहाल आपके पास ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल नहीं है और है, सपोज दैट मान लेते हैं कि ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है लेकिन ये डायामैग्नेटिक है, तो दे डू नॉट शो एनी टाइप्स मैग्नेटिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सपोज दैट ये मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है, तो ये आपके पास ये मैग्नेटिक मटेरियल जो है ये किसी भी टाइप का कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा. तो दे डू नॉट शो एनी टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर in absent of magnetic field. They do not show any types of magnetic behavior in absence of magnetic field. When these substances are repelled in magnetic field, magnetic field. These substances are repelled magnetic field lines. Their resultant magnetic momentum because zero. But orbital magnetic momentum includes in the opposite direction of field. Suppose that magnetic field इस डायरेक्शन के अंदर है, तो ऑर्बिटल मोशन जो होगा इसके एक दूसरे के अपोजिट होगा. Their resultant magnetic momentum because zero becomes zero, but orbital magnetic momentum is included in the opposite direction of the field. Hence, the substances are repelled in magnetic field. Hence, these substances are repelled in magnetic field. North pole and south pole, magnetic material. These magnetic substance. These substances are repelled magnetic field lines. These substances are repelled magnetic field lines or magnetic field. Next point is diamagnetic does not depend on temperature. Diamagnetic does not depend on temperature. No dependent of temperature. Diamagnetic no dependent of temperature. Diamagnetism does not depend on temperature and almost the substance show the properties. Diamagnetic does not depend on temperature
and almost all the substance, only all the substance show this properties. So this property only of only substance ही ये property show करेगा. Show this properties. It is weaker the paramagnetism. Due to this is difficult to observe this properties in substance having unpaired electrons. Due to this is difficult to observe this properties is substance having unpaired electrons. Repeat करता हूँ. Thus, the substance in which paired electrons are present have zero magnetic momentum. The substance in which paired electrons are present have zero magnetic momentum because both the electrons are neutralized. Effect of each other. Such substances are known as diamagnetism. They do not show any types of magnetic behavior, absence of magnetic field. They do not show any types of magnetic material. They do not show any types of magnetic behavior in absence of a magnetic field. When these substances are repelled in magnetic field, यदि आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा भी दिया तो ये सब्सटेंस क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा. ये सब्सटेंस इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करेगा. When these substances are repelled in magnetic field, their resultant magnetic momentum जीरो है, फिर भी ये क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल कर रहा है. Why? When these substances are repelled in magnetic field, the resultant magnetic momentum becomes zero. But orbital magnetic momentum include in the opposite direction. Orbital magnetic momentum include in opposite direction of magnetic field become zero, but orbital magnetic momentum is include in the opposite direction of the field. सपोज दैट ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ऑर्बिटल, ये जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स इसके मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रोटेट करेगा. तो मैग्नेटिक फील्ड, द डायमैग्नेटिज्म डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. हेंस these substances are repelled in magnetic field. Diamagnetism does not depend on temperature. All the substances are show of the properties, magnetic properties. Very, very important. Two topics. Diamagnetism, very, very important. Diamagnetism does not depend on temperature. And almost all the substance show these properties. डायग्राम इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. जब आप मैग्नेटिक यूज में नहीं लेते हैं तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंटम जीरो होता है, और मैग्नेटिक मोमेंटम जीरो है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा, मैग्नेटिक लाइन से नहीं होंगे, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा. मान लेते हैं सपोज दैट आपने नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल लगा लिया, टू मैग्नेट्स यूज में ले लिया, और ये आपने मैग्नेटिक मटेरियल यूज में ले लिया, तो क्या करेगा, नॉर्थ पोल से निकलने वाली ये मैग्नेटिक लाइन्स जो होगी, ये मैग्नेटिक मटेरियल इसको रिपेल करेगा. अब क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके पास मैग्नेटिक मोमेंटम, सर टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है, मैग्नेटिक मोमेंटम जीरो है, दिस मैग्नेटिक मोमेंटम इज जीरो, बट इस मैग्नेटिक लाइंस को ये मैग्नेटिक मोमेंटम रिपेल कर रहा है या अट्रैक्शन कर रहा है, बट यहाँ रिपेल कर रहा है, तो रिपेल कर क्यों रहा है, क्योंकि ऑर्बिटल मोशन जो होगा, ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम इज इंक्लूड ऑन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होगा इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अपोजिट होगा थोड़ी, तो ये अपोजिट होने की वजह से ये मैग्नेटिक मटेरियल अपोज द मैग्नेटिक लाइंस को रिपेल करेगा. दिस मैग्नेटिक मटेरियल रिपेल द मैग्नेटिक लाइंस, तो मैग्नेटिक लाइंस को रिपेल करेगा. सो डायग्राम इस टाइप से आ जाएगा. किसके लिए, डायमैग्नेटिक के लिए.
डायमैग्नेटिक में होता क्या है कि मैग्नेटिक लाइंस रिपेल होती है मैग्नेटिक मटेरियल के द्वारा जब आप क्या कर देते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। ओके दोस्तों, ओके स्टूडेंट्स, सॉरी। नेक्स्ट पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म कंप्लीट, पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरली सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इज इक्वल टू अनपेड इलेक्ट्रॉन जनरली सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इज इक्वल टू अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, आगे देखें। द रीजन फॉर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इज टू टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फर्स्ट ऑर्बिटल मोशन एंड सेकंड स्पिन मोशन। द मैग्नेटिक मोमेंटम इज सम ऑफ द टू मोशंस म्यू एल एंड म्यू एस। म्यू एल इज इक्वल टू ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम एंड म्यू एस इज इक्वल टू स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम। बी एम, व्हाट इज द बी एम? बी एम इज बोर मैग्नेटॉन, फुल फॉर्म ऑफ बी एम, बोर मैग्नेटॉन। वन बोर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू ई एच अपॉन 4 पाई एम सी। म्यू एस, म्यू अप्रोक्सीमेटली म्यू एस, म्यू एल यहाँ पर लगभग 0 कर दिया गया, ऑलमोस्ट 0 म्यू एल। सो क्यों, बट वाई? एक्सटर्नल फोर्स, ऑर्बिटल मोशन के ऊपर क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से म्यू एल को लगभग 0 मान लिया जाता है। तो ऑर्बिटल मोशन इज इक्वल टू 0, जनरली म्यू इज इक्वल टू म्यू एस। सो मैग्नेटिक मोमेंटम इज इक्वल टू एन ब्रैकेट स्टार्ट एन प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। हियर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। यूज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जनरली, यूज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जनरली। Main 3 types of magnetic properties: diamagnetic, paramagnetism and ferromagnetism. First is diamagnetism. The substance in which paired electrons are present have zero magnetic momentum. In substances paired electrons are present. Paired means plus half and minus half. Paired electrons are present in zero magnetic momentum because both the electrons neutralize effect of each other. Such substances are known as diamagnetic substance. Hence, these substances are repelled in magnetic field. Diamagnetism does not depend on temperature. Diamagnetism does not depend on temperature. Almost these substances are repelled in magnetic field. Almost all the substances show these properties. Almost these substances show these properties. Next point. Almost these substances show these properties. Next, paramagnetism. It is found in substance in which unpaired electron present. It is found in the substance in which unpaired electron present. It is found in the substance in which unpaired electron present. The electron does not cancel effect to each other. वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो इससे सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए सेकंड इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसलिए द इलेक्ट्रॉन डज नॉट कैंसिल इफेक्ट टू ईच अदर. सच सब्सटेंस शो पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज. These substances are strongly attached towards magnetic field. Strongly attached. These substances are strongly attached. These substances are strongly attached. स्ट्रॉन्गली मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये मैग्नेटिक लाइंस हैं, तो मैग्नेटिक लाइंस ये स्ट्रॉन्गली अटैच हो जाएगा ऐसे, स्ट्रॉन्गली अटैच. ये मैग्नेटिक लाइन से हैं, मैग्नेटिक लाइंस इस टाइप से हैं, और ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गली अटैच हो जाएगा ऐसे. मैग्नेटिक लाइन से ऐसे जा रही थी, ऐसे जनरली ऐसे जा रही थी मैग्नेटिक लाइन से, और ये स्ट्रॉन्गली क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे ऐसे, अपनी अपनी साइड के अंदर बैंड हो जाएंगी. ऐसी थी मैग्नेटिक लाइंस, और ये स्ट्रॉन्गली अटैच हो जाएंगे ऐसे. तो these substance magnetic substance, these substance are strongly attached towards magnetic field. Paramagnetism is inversely proportional. Paramagnetism is inversely proportional to the temperature. But diamagnetism does not depend on temperature. Does not depend on temperature. Very, very important points. Paramagnetism is inversely proportional to the temperature. Very, very important. Means paramagnetism depends on number of unpaired electron. Diamagnetism does not depends on unpaired electrons. Does not depends on unpaired electrons. But paramagnetism
depends on unpaired electrons. N atoms, ions or molecules. N atoms, ion or molecules of substance can be considered as a magnet. N atoms, ions and molecules of substance and atoms, ions or molecules of substance can be considered as a magnetism या magnet. Only ये rule only paramagnetism है, but almost all the substance show this properties. Almost all the substance show this properties. Almost all the substance show this properties. And paramagnetism, n atoms, ions or molecule substance can be considered as a magnet. Next day topics start now. Ferromagnetism. Okay.